हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त क्लाउडविन टेक्नोलॉजी से। तो दोस्तों आज हम देखेंगे डॉकर के अंदर की इंस्ट्रक्शंस कौन से होते हैं एंड इंट्रोडक्शन टू डॉकर फाइल एंड आल्सो वी विल प्रैक्टिस ऑफ custom docker image creations and once we have complete all this topic then we will go with the more advanced. ओके, सो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का टॉपिक की इंस्ट्रक्शंस। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डॉकर की फाइल बनाने से पहले उसके जो कि इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो डॉकर के अंदर की इंस्ट्रक्शंस होते हैं मेनली जो यूज्ड होते हैं वो कुछ इस तरीके से फ्रॉम। तो फ्रॉम इज स्पेसिफाई द बेस इमेज, राइट, and maintainer and label, right, specify owner of the docker file। maintainer जो है वो deprecated हो चुका है and उसकी जगह label introduce हो चुका है and run is specified to instruction to execute at the time of the docker image creation, right। then cmd, अब यहाँ पे देखिए जो run है वो इमेज के क्रिएशन के टाइम में एग्जीक्यूट होता है, राइट। जैसे कि इसका यूज आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िग बिल्डिंग के लिए करते हैं, राइट। एंड उसके बाद में जो सीएमडी होता है ये एट द टाइम ऑफ कंटेनर क्रिएशन पे एग्जीक्यूट होता है, ठीक। इसका यूज आप डिफॉल्ट कमांड्स जैसे कि आपको नोड के अंदर npm स्टार्ट एंड मेवन के अंदर आप mvn क्लीन इंस्टॉल जावा अगर हुआ तो एंड डॉट नेट हुआ तो उसमें आप जो उसके अंदर पब्लिश, राइट, डॉट नेट पब्लिश डॉट नेट लाइक दैट कमांड यू कैन यूज टू specify your applications when this application is going to execute. In such a scenario, you can use this. Okay. So then we have the copy command. Copy is very simple as you have learned the Linux, and if you not have the understanding of the Linux, then you have to watch the Linux playlist first, then come to here. And same concept we are using here to copy means just like Linux command, like cp there is a in Linux, right? In here Docker we have the copy. Copy is used to copy files from host machine to container machine. तो कॉपी का यूज हम होस्ट मशीन से कंटेनर मशीन में जब को सोर्स कोड एप्लीकेशन कोड को कॉपी करना होता है तो हम उसको यूज करते हैं कॉपी इंस्ट्रक्शन से। देन वी हैव द add add command. So it is also used for copying files from source to destination, but also you can download from file from the URL, right? So add is a more advanced version of the copying file, right? You can copy from host to virtual machine as well as you can download from the URL. Then working directory, work dir is to set to working directory। जैसे कि अगर आपको वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी है कंटेनर के अंदर, राइट, आप इमेज क्रिएट करते हो तो उस इमेज के अंदर आपको एक वर्किंग डायरेक्टरी बनानी है। आप कहते हो कि हमारा जो एप्लीकेशन कोड होगा वो इसी के अंदर जाके स्टोर होना चाहिए, तो आप वो सेट करते हैं। तो उसके बाद में जब npm init करते हैं तो वो जो भी सोर्स कोड होता है वो उसी में जाके कॉपी हो जाता है। फॉर दैट वी यूज द वर्किंग डायरेक्टरी, सो इट इज यूज टू स्पेसिफाई द वर्किंग डायरेक्टरी। देन एक्सपोज, to expose the on which port number our application will run in container, right। तो देखो हम डोकर फाइल लिखते हैं, तो हम डोकर फाइल लिखते हैं उससे इमेज क्रिएट होता है। तो इमेज हम दूसरे को थोड़ी पता है कि इमेज का कंटेनर पोर्ट कौन सा है। तो जो हम इसको एक्सपोज करते हैं तो इमेज के अंदर हम ये इसके जो मेटा डेटा होता है उसके अंदर इसको पोर्ट नंबर बता देते हैं कि एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर कौन सा है। तो जब कंटेनर रन होता है तो उसको पता चलता है कि एप्लीकेशन कौन से कंटेनर पे रन कर कौन से पोर्ट नंबर पे रन कर रही है। देन वी हैव द एंट्री पॉइंट, एग्जीक्यूट्स एट द टाइम ऑफ द डॉकर कंटेनर क्रिएशन, राइट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको कि एंट्री पॉइंट भी एंट्री पॉइंट जो है इसका यूज भी हम एट द कंटेनर एट द टाइम ऑफ द डॉकर कंटेनर क्रिएशन यूज करते हैं एंड इसका यूज भी आप कमांड डिफॉल्ट एंड एप्लीकेशन रिस्टार्ट एंड स्टॉप लाइक सर्विस रिस्टार्ट रिस्टार्ट करने के लिए करते हैं। और सो द डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज वेरी सिंपल, जो ये होती है ये कैन नॉट बी इजीली ओवररिडन एंड सीएमडी कैन बी ओवररिडन, राइट। दोनों के ही जो एंट्री पॉइंट होता है वो डोकर के अंदर जो कंटेनर का प्रोसेस होता है वो P1 यूज करता है, ठीक है। तो दैट्स वाई इसको बहुत इजीली आप ओवररिडन नहीं कर सकते।
Yes, you can use the hyphen entry point for to override that, right? So it can be override but not easily, right? CMD can be overridden but not easily. तो यहाँ पे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी निकल के आते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CMD एंड एंट्री पॉइंट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रन कमांड एंड CMD? तो जो रन कमांड होता है वो इमेज क्रिएशन के टाइम में, सो आप ऐसे बोल सकते हो, रन इज यूज टू at the time run is executed at the time of the image creation. It is used to install software and dependencies on the applications, right. And CMD, it is execute at the time of the container creation, and it is used to set the default commands and like starting the application, stopping the applications. Such a kind of command we can specify, right? And it can be overridden, right? Yes, definitely it can be overridden, right? And last command will be priority, right? If you give a multiple CMD command on your Docker file, then last command will be priority, right? Then we have the difference between the CMD and entry point. So entry point use the Docker process P1 and CMD also use P1, but the difference is entry point cannot be the easily overridden, whereas CMD can be the overridden easily. Although entry point also can be overridden, but it is not easily, right? You have to do that manually at the time runtime. You can set that, right? So that's what the difference between the entry point and CMD. Then we have the another command is it is user. User is used to set the user to run the commands. तो जब आप इमेज क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आप यूजर की एक यूजर सेट करते हैं और स्पेसिफाई करते हैं कि यही यूजर आपकी डोकर इमेज को रन करेगा. That's why we have this. Now another thing, we have the introduction to Dockerfile. So come to the Dockerfile. Hope you guys you have understood all the key instructions. If you not understood, please watch this video till here again and again until you get clarity. Then come to the here. Introduction to Dockerfile. So Dockerfile क्या होती है? Dockerfile एक plain text, right? Or it is used to automate the Docker image creation. Or you can say Dockerfile is a plain text or an automation file which is used to automate the Docker image creation, right? Why we are creating image? Image we are going to create because we want to run our application inside the container. With image, we can create the container. With Docker daemon, will understand the Docker image, and based on that, that will run our application, right? Into the container. That's why we are going to create that. Then we have the here is a sample Docker file of the mic of the .NET applications. So here you can see we have the from command. As I told you, we have the from is used to specify the base image. Using that from, we are going to run this we are going to create, and the operating system that we use this Docker file is going to use is of as a Microsoft.NET SDK 8.0, right? So, and working directory that we are setting from using the work dir, and that is type src. Then we want to copy. After that, whatever we are going to copy from the source to destination, source will be the our host directory and destination will be our work dir that we have set it. That run .NET and publish -c and release -o and though if you don't know about these Docker this is the Docker runtime commands that we use to build publish, right? So this is going to .NET publish, right? And also it is going to release, right? Using from the /app. Then another, as it is a मल्टी स्टेप इमेज है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि वी हैव द अनदर रन टाइम. सो सबसे पहले हमने यहाँ पे एसडीके बनाया, देन वी आर यूजिंग द रन टाइम फ्रॉम द बिल्ड वट एवर दैट सोर्स build got generated. We will take that build from there, and we will take it from our this directory, and CMD copy is used to copy from source to destination, and that means it is copying from host machine to virtual host machine to container. Then we have the CMD. CMD will use to run the commands as I told at the time of the
कंटेनर क्रिएशन। सो जब कंटेनर क्रिएट होगा तो डॉट नेट हेलो वर्ल्ड डॉट नेट DLL फाइल को हम रन करेंगे। इससे क्या होगा कि एक कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। देन वी हैव अनदर इज नोड। सो नोड का भी कुछ इसी तरह से फ्रॉम dir कॉपी रन कॉपी एक्सपोज CMD। Then we have Python. So these three example I have taken for to make you understand better. And then we have डोकर इमेज। सो सबसे पहले डोकर इमेज डोकर फाइल के अंदर क्या होता है। सो द मेन गोल इज टू क्रिएटिंग डोकर फाइल इज टू ऑटोमेट द इमेज क्रिएशन प्रोसेस। सो वी आर एक्चुअली वांट टू क्रिएट द डोकर इमेज। then why we are going to create docker image is a simple blueprint or template in order to create the docker container, right? So we have the multiple container, right? We can create multiple containers by using the Docker image. Even though if the container got uh, destroyed or deleted for some reason, then also we can use the same Docker image to create a Docker container. That's why we are going to use the Docker image. Then we have used to custom image. So then we have the next topic is custom image creation, right? Although we have taken the here two to three examples of the different tech stacks, you can go and practice all of these tech stacks. Now come to the custom images. What custom images do we have? So how to create custom image? In order to create custom image, make sure you are using the Linux operating system. Within the Linux operating system, you can go and create your own desired directory. Within that directory, you can create Docker file. Docker file start with the capital D, and it there is no gap between the docker and file, right? So it should be like this. So you have to create this file. Within that file, you this is we call docker file. This is we call that automation or plain text file, which is used to automate the image creation process. So this is how it is look, right? Although we have seen many examples in before, same example we have here also. So here we have the alpine, is it is in hello world image. So alpine, you know, it is a Linux lightest distribution that we use to run our container within the alpine. So within the alpine operating system, I want to echo the hello world program. For that we can create our own custom image. So whatever these two commands you are able to see on my screen, those two commands you have to copy and paste into the docker file. And you have to write w- hmm, then you have to save that docker file, and then you have to create that docker image from that docker file. So how you can create the docker image from the docker file? There is a docker build -t and my img and tag. This command is going to create your docker image, right? And here, if you know, if you didn't watch the previous tutorial, so I recommended you please watch those tutorials. There is a Docker tagging and Docker port mapping has already explained within the playlist. Go through those playlists and watch again and again. And I will also share those playlists with into the I button. So here you can see that we have the tagging. Tagging is used to tagging is used to maintain the Docker version in with different environments. Port mapping is used to port exposing the port, right? So we have the Docker tagging. If you don't know about the Docker tagging, I can also explain the Docker tagging. Docker tagging is used to identify the version of the Docker image. Hope you have enjoyed today's tutorial, and guys, please like, share and subscribe because we need your support. We are giving a lot of efforts of creating these videos. Thank you.